about the screened coulomb potential. We consider a point charge q placed in a sea of conduction electrons. ठीक है, the Poisson equation for unscreened coulomb potential is this, which is nabla square phi naught minus 4 pi q dr. We know that uh, phi naught is equal to q by r. That looks like linear charge density. Let us write phi naught r. Okay, r variable क्योंकि linear. Okay, phi naught r is equal to 2 pi raised to the power minus 3 integral over dk phi naught of k exponential I k r. So it यहाँ पे k है, ये वाला इसका वेरिएबल चेंज कर दिया और एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर से इसको रिप्लेस किया वेक्टर से, ध्यान देना. वी यूज इन 36 द फोरियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेल्टा फंक्शन. सो क्या था, डेल्टा आर जो यहाँ पे इधर है उसको रिप्लेस करेगा इससे. डेल्टा आर इज इक्वल टू dr is equal to 2 pi this dk exponential a. So that is for del r. Okay, so what is this? This is okay, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. व्हाट इज दिस यहाँ देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाइड तो नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ देखो फाई है, यहाँ भी फाई नॉट है, लेकिन यहाँ पे एक के ब्रैकेट में नहीं आया है. ठीक है, ये वाला. तो डेल आर क्या एग्जैक्ट रिलेशन है लेकिन पता नहीं. तो फंक्शन ही लग रहा है, फंक्शन ऑफ आर. ये भी वही है, डेल आर. बस ये शायद यहाँ जाएगा, देखता हूँ. So once k square uh, phi naught of k is equal to 4 pi q 4 pi q 4 pi q minus 4 pi q. let's see क्या रिलेशन है. 4 pi q दिस ये जूम कर रहा है कहाँ से पता नहीं. 3e लिखा हुआ है. लेट्स गो टू 3e. by 3e. So here, अच्छा यही था. इसको we use this in the relation between ये. So we'll come back here. So ठीक है, तो उसको लिखना पड़ेगा. ठीक है, by 3e. but this is by 3e on the previous equation. Okay, find out by phi of k is equal to epsilon of k, where phi k is the total or screened coulomb potential, the total potential ही है. ठीक है, we use epsilon k in the Thomas Fermi form of 33. That is 33 Thomas Fermi form. ओके, ये इक्वेशन शायद लिखना पड़ सकता है. तो ये क्या है, दो अलग अलग पार्ट्स है. इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग को एक बार देख लेंगे. ठीक है, फाइंड use epsilon k e this, and phi of k is equal to 4 pi by 4 pi q by k square plus ks square. The screen coulomb potential is the transform of phi of vector k phi r from
where phi r, 4 pi q by 2 pi q इंटीग्रल ओवर डी के। यहाँ पे एक फाई नॉट के था, फाई के यहाँ पे है, फिर उसके बाद एक यहाँ पे था ये वाला फाई नॉट, लेकिन फाई कैसा आ पता नहीं। ओके, डी कॉस थीटा एक्स, डी कॉस थीटा आ सकता है एक्सपोनेंट, क्योंकि ये वाला एक्सपोनेंशियल आई के है। बट ओके, डी कॉस थीटा एक्सपोनेंशियल आई के आर कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट था। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, इधर कैंसिल आउट करके क्या आया, पाई स्क्वायर कहाँ गया, अच्छा ये वाला पाई बाहर आ जाएगा, इधर 2 4, 4 इंटू 2, ठीक है, 4 इंटू 2 8, 8 बाय ये कितना है, अभी 8, 2 का है, क्या बच गया, ओके नॉट मेकिंग सेंस। ओके, लेकिन पाई का सेंस बन रहा है, पाई है यहाँ पे 2 पाई यानी 3 पाई है। ओके, यहाँ पे 4 इंटू 2, ओके समथिंग होगा इधर, साइन और से कुछ आया होगा। ठीक है, तो डी कॉस थीटा यहाँ पे है साइन के आर के प्लस ये वाला डी के, इधर 2 क्यू, रिजल्टिंग क्या है, क्यू बाय आर एक्सपोनेंशियल ऑफ ये माइनस के आर एस। पहले क्या था, पहले जो क्यू आर था वो था तुम्हारा फाई नॉट था तुम्हारा क्यू बाय आर, यहाँ पे फाई क्या हो गया, फाई ऑफ आर हो गया है क्यू बाय आर इंटू एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो वो ये हो गया। ठीक है, फाइनल जो है ये हो गया, ये एक रिलेशन हो गया और ये एक रिलेशन था। ठीक है, नया है एक्सपोनेंशियल आ गया। द स्क्रीन कूलम्ब पैरामीटर के एस इज डिफाइंड इन 34, 34 दिस इक्वेशन 34, ना उसको लिखना ही पड़ेगा, लग रहा है 2 बार आ गया वाला रेफरेंस हो गया। The exponential factor reduces the range of Coulomb potential. The bare potential Q by R, bare potential बोल दिया, ठीक है, उसको bare potential बोल दिया है क्या, इसको, ठीक है, इसको bare potential बोला है। ठीक है, bare potential is obtained on letting the charge concentration n naught tending to 0 and Ks tending to 0 in the vacuum limit phi of k is equal to 4 pi q by k square। वो कैसा आएगा, यही शायद सेम इक्वेशन को सॉल्व करके आता होगा। One application of the screen interaction is to the resistivity of certain alloys. The atoms of series CU, Z and GAGE as have valencies 1, 2, 3 or 5. An atom of Z and GAGE or AS added substitutionally to metallic Cu has excess charge referred to Cu of 1, 2, 3, 4 if all valence electrons join the conduction band of the host metal. The foreign atoms scatter the conduction electrons with an interaction given by screen Coulomb potential. So the foreign atoms scatter the conduction electron with interaction given by screen Coulomb potential. This scattering contributes to the residual electrical resistivity. And calculations by most of these resistivity increase are in fair agreement with the experiment by Mott। Calculations by Mott agree करता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा देख ही लेते हैं। ये क्या है, कंपेरिजन स्क्रीन एंड अनस्क्रीन कूलम्ब पोटेंशियल। अनस्क्रीन कूलम्ब पोटेंशियल 1 by r एक्सपोनेंशियल k r s by r। स्क्रीन कूलम्ब पोटेंशियल r का ये में क्या है, कम r के लिए स्क्रीन पोटेंशियल 1 है और सेम
आर के लिए जो तुम्हारा अनस्क्रीन पोटेंशियल हो ज़्यादा है, 5 के लिए भी अन अन क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल जो है, नहीं नहीं, तो इसी का ज़्यादा है, अनस्क्रीन पोटेंशियल ही ज़्यादा है हमेशा, स्क्रीन पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल कम है ऑलवेज। बोथ केस में यहाँ पे ज़ीरो हो गया, लेकिन ये ज़्यादा है, ठीक है। So comparison of screened and unscreened potential of static unit positive charge. The screened Coulomb potential length is 1 by Ks, is equal to unity set equal to unity. Case the static unscreened interaction is taken in the Thomas Fermi approximation, which holds for low low wave vector q much less than q qr kr kf. More complete calculations will be wavelength including X-ray oscillation called Friedel oscillation. ये लो पार्ट में pseudo potential u, the length, the legend in figure 9.22b, 9.22, okay. ये क्या है, पता नहीं कौन सा है. We stated a result that is important in pseudo potential theory. For very small k, the potential approaches 2 by 3 times minus times of the Fermi energy. The result, which is known as the screen ion limit for metal, can be derived from equation 39. This equation क्या है? The result for which is known as the screen ion limit. Screen ion limit. Screen ion limit for metals can be determined from equation 3.9 39 when converted to the potential energy of electron of charge E in a metal of valency V with n naught ions per unit volume. The potential energy of component at k equal to 0 becomes u0 is equal to enz phi of 0 is equal to 4 pi z and e square by ks square. The result 34 for ks square in this situation is ks equal to 6 pi n naught, whence u is equal to 3 by 2 times ef. Pseudo potential ks in 34. 34, take a case. Okay, let's see what this is. Electrostatic screening. What else do we have here? Okay, last one chapter. Electrostatic screening. The electric field of a, oh, okay, so we are going back a little. Okay. The electric field of a positive charge embedded in an electron gas falls off with increasing r faster than 1 by r because of, okay, electric field. Acha. Because of the electron gas tend to gather around and thus ठीक है, so potential because of an electron is lowered because of electron gas. ठीक है, ठीक है. The static screening can be described by wave vector. Okay, potential कम हो गया ज़्यादा हो गई है, मेन चीज़ पता चल जाएगा. So the static screening can be described by wave vector dependence of static dielectric function. ये static dielectric function
Dielectric function epsilon of 0 and k. We consider the response of electrons to an applied external electrostatic field. We start with a uniform gas of electrons of charge concentration minus n naught e, superimposed on a background of positive charge of concentration n naught e. Let the positive charge, okay, let's go through. We consider the response of electrons on applied external electrostatic field. We start with a uniform gas of electrons of charge concentration A superimposed on a background of positive charge of concentration n naught E. So both charges are there. Electric field positive. Oh, ठीक है ठीक है. Positive charge बोला यही तो जाना था. The positive charge of embedded E falls off with increasing because अलग अगल बगल इलेक्ट्रॉन दूसरा ये हो जाता है. हाँ सही सोचा था. Let the positive charge background can be deformed by can be deformed mechanically to produce a sinusoidal variation of positive charge density of in the x direction. So phi plus of x is equal to n naught plus uh, charge density exterior of k sin kx. ठीक है. x direction k क्या है? The term rho external k sin kx gives rise to electrostatic field that we can uh, we can call external applied to the electron gas to the electron gas. The electrostatic potential phi of charge distribution found from Poisson's equation nabla square of phi is equal to 4 pi rho. ठीक है. ये कुछ मेन इक्वेशन इसी के बाद में वेरिएशंस है. 4 pi rho by 3 e is equal to minus phi of rho. ठीक है. nabla of this phi. ठीक है. पोटेंशियल है ये phi. ठीक है. For the positive charge we have, for the positive charge we have phi is equal to phi exterior sin kx and rho is equal to rho exterior sin kx. The Poisson's equation give relation k square. ठीक है. Poisson equation कहाँ गया? ठीक है. Poisson equation कहाँ पे? ये था Poisson equation and this equation is giving us this. ठीक है. nabla of phi k स्क्वायर आ गया और फाई एक्सटीरियर आ गया. साइन कहीं चल गया घूमने. ठीक है. के स्क्वायर आ गया ये फाई की जगह. ठीक है. के स्क्वायर एक्सटीरियर इज इक्वल टू 4 पाई एक्सटीरियर. या ठीक है. The electron gas will be deformed by combined influences of the electrostatic potential phi kx, phi exterior, of positive charge distribution and of the as yet unknown induced electrostatic potential phi induced sin kx or the deformation of electron gas itself. The electron charge density is this electron charge density. ठीक है. इलेक्ट्रॉन अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा. पहले किसके बारे में बात कर रहा था? The positive charge background deformation क्या क्या बोलता. Okay, moving on. Where rho induced k is the amplitude of charge density variation induced in the electron gas. You want to find rho induced k in terms of rho exterior k. The amplitude of total electrostatic potential phi k is equal to exterior क्या होता है exterior plus induced of the positive and negative charge distribution is
related to total charge density, where rho k is equal to rho exterior plus rho induced. By Poisson's equation, then we have again same equation, same kind of equation like this. Here एक ही दिख रहा, लेकिन exterior नहीं है, ठीक है. To go further, we need another equation, ठीक है. और information क्या चाहिए भाई? That relates the electron concentration to electrostatic potential. We develop this connection in what is called Thomas Fermi approximation. ठीक है, इसके लिए थॉमस फर्मी approximation चाहिए that relates electron concentration to electrostatic potential. ठीक है. The approximation consists in assuming that a local internal chemical potential can be defined as a function of electron concentration at that point. ठीक है. Consists of assuming that local internal chemical potential, ठीक है, this thing can be defined as a function of electron concentration at that point. ठीक है. The chemical potential of the electron ज़्यादा. Now the total chemical potential of the electron gas is constant in equilibrium independent of position. ठीक है. In a region where there is no electrostatic contribution, the chemical potential we have mu is equal to this, whatever that is, phi e epsilon f, the h square by 2m 3 pi square n naught 2 by raised to the power 2 by 3 at absolute zero according to 6.17. We have it here. Epsilon for omega is equal to 0. ये तो कौन सा chapter है? Is this 6? No, this is not 6. वहाँ से relation use कर रहा है. ठीक है. So equation 27, memorize this. ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से आ रहा है 6.17 से. In a region where the electrostatic potential is phi of x, the total chemical potential is constant and equal to this, इससे अलग, ठीक है, E phi is equal to whatever this is, मतलब expression where EF is the local value of Fermi energy, where EF of x is local value of Fermi energy. The expression 28 is valid for static electrostatic potential that varies slowly compared to the wavelength of electron in the Fermi at the Fermi level. Specifically, the approximation Q much less than Kf by Taylor series expansion EF equation may be written as d of EF by d n naught is equal to nx minus n naught. ठीक है. Okay, I have no idea what this equation is. We have df and not is equal to this. The left hand side of introduce part of the electron concentration. Thus the Fourier components of this equation are this, which becomes this. We have this. ठीक है, ये वाला शायद मेमोराइज करना था या ये वाला नेक्स्ट वाला. So we have Ks equal to this, which is substituted, ठीक है, where A naught is Bohr radius, d is the density of states for free electron gas. The approximation is called Thomas Fermi dielectric function. The approximation 33 is called Thomas Fermi dielectric function on by case of Thomas Fermi skinning length as in below. ठीक है. For the copper n naught is equal to this, screening length is this 0.5 Armstrong. We have derived two limiting expressions for the dielectric function of the electron gas. ठीक है, these are limiting expressions. ये शायद पहले फाइंड आउट किया हुआ है. नहीं, ये तो यहाँ फाइंड आउट किया गया और ये शायद पहले से. ठीक है, तो 0 के और
ओमेगा ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो के यहाँ फाइंड आउट किया गया, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, we notice that epsilon of 0k as kn does not approach the same limit as uh, omega 0 as omega approaches 0. This means that the great care must be taken with dielectric function near the origin of omega k plane. The full theory of general function epsilon is due to Linhard. ठीक है, ये सब किया। ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बाद में आ रहा है, इससे पहले क्या है? पोलर रिटर्न्स में डिस्ट्रीब्यूशन। Okay.